to this tournament. So I would. Okay, yeah, and considering again we have 18 matches, right? And you're talking about like getting accustomed to the lobbies, you don't have time, and we have actually seen, like you mentioned before, a lot of coaches come in, a lot of really well-known coaches, some maybe on Nova X Quest F, the ones who have been able to take home PMWI. Like, how much can a coach realistically offer you when you only had, I guess, maybe a little bit of lead up into the event, but you only have 3 days of play? It's really hard to make drastic changes to how the lobbies play out. I mean, in terms of gameplay, of course, you've got a lot of research and work that's been done in the background. I think it's mostly getting the players and the teams in the mentality, because a lot of the coaches that have been picked up by these teams have that LAN experience. They know how it works out. They know how the teams adapt to it. And I think just telling them how it's going to happen and how it's going to go down is really good for the mental state. Like, they more prepared heading into this. All right, well, ladies and gentlemen, we're going to be getting into our first match shortly here, but I want to give a shout out here to Sony with the Play to Win with Xperia 1 IV, created in collaboration with professional esports players, so you know it's going to be good. The Sony's Xperia is the official smartphone provider and partner here of PUBG Mobile. But as you saw before on the schedule, we do have Erangel coming up here in just a few moments to kick things off for this event. High fives going out, at least air high fives as well here. But it's time to bring in our commentators, maybe have a little chat with them before the match kicks off here. We got John, Allen, and Blank joining me here on the desk. Gentlemen, this is going to be crazy. It's going to be exciting. Maybe you have some teams you want to point out. I'll leave the floor open to you. Thank you very much, Jason. Yeah, we're going to be getting into this first game. Blank, there's a lot of teams here with a lot on the line. There is, yeah, and Jason was asking, you know, is there any other teams that maybe we're looking at? I think there's one team that maybe the guys on the desk haven't mentioned yet that I'd love to talk about, and that is actually Vampire Esports. I do think that this team currently looks extremely good as a team overall. You know, they've been through a lot of different iterations of Victim Sovers at the start of the year into Victim 365, then Ion Esports in their qualifier for the Spring 22 finals, and now finally coming through you know, now as Vampire Esports. So, oh no, they were Power Triple 8 right at the beginning. Sorry, that's Morph GG I'm talking about. But they've gone through a lot of iterations. They have now Corpai on the team, who used to be on Power Triple 8 when they had some of their better games. He's coaching, so they're talking about coaching on the desk as well. This could be a great position for them. Yeah, absolutely. It's going to be looking pretty strong for them right now. Everyone loading up into the game. I think we got the playing path of the first game. I know, just trying to get people into the match, and already we are having things kicked off here in the PMWI, this regional clash between so many different players from so many different countries here. It's great to see the representation. There's no problems either because everyone's playing here at LAN. Game number 1 loading on up. Erangel as we kick things off here. Players loading on. The plane path moving over as it fades into the map. Loading on up. Match number 1. It all starts now. The helicopters flank the plane. Helicopters coming out of this one next to the plane here. We are having our plane path already. We did get a little quick sneak peek at this plane path at the beginning of the game, heading just under Novo up towards Gatka. Now this is a fantastic little drop spot already for Stalwart. I'd imagine they're going to be dropping out the plane here, but it's Aton jumping out almost immediately, heading up possibly towards Mill to Power. That's a drop spot that they've been loving recently. Rozok, on the other hand, quite inaccessible, and that was going to be quite the big hot drop for a lot of teams like Donuts heading up there, a few other teams on that location with Damwon and Kia just underneath them in School and Apps, but you can see that Stalwart already immediately in Nova Repnoya. Sometimes they will head towards North Sosnovka, but this is their preferred drop, and this is great for an 18-man lobby, John. Yeah, and then Wildcats as well over on that military base, joining them on that South Island. Those northern crossings may be a little bit more populated, do you think, after those bridges with this plane path as south as it is. Some teams will try and migrate north, sure, but that traffic jam will certainly have an impact. Yeah, you're just trying to cover as much of the map as possible. You know, James, Max, Jason on the desk, all talking about this beforehand, saying that, you know, there is going to be a lot of space on the map that you're going to have to cover. Not so many scouting positions now can be taken for these teams, just in the early game at least, just in case you get caught off guard by a team that's in the vicinity that you maybe wouldn't think would be there before.
Though we do have Vampire Esports, they are doing their usual drop down towards Ferry Pier, Quarry, and Primorse, really taking things wide at the beginning of this game. Yeah, a little bit of a late dropout, sure, but it was fairly close by to the plane path, right? So they will have plenty of time to be able to navigate and get things sorted for themselves moving forwards on their northerly movements that will have to come through as the circle pops. It looks like Falcon already in competition with Morph. The top of the hill currently occupied by Morph. Yeah, it's going to be quite difficult here for Morph to actually... well, it's very easy for Morph to pick up on this one because Falcon's drop is a little bit further up towards Yaz, honestly. So Morph drop out early, get the catch on Falcons. Already taken one player from alone down here. Does get res back up into the fight, though. So not quite elimination coming through just yet. But Donuts USG actually currently have 2 points already. Yeah, they're starting to pop off. I mean, looks like they've managed to find themselves a little bit of a spot. Falcons, as we're talking about, rezzed up in a little bit of cover. Presence known, though, between those two teams on that split area. Never alone. Has his team. Yep. Seems to play to the name. But look at this. You got Box Gaming with some trouble. Yeah, Box dropping right on the coastal side, and it's VGS trying to pass by them in vehicles. Now, VGS have 2 spots. It's up towards Severny as their secondary, Lipovka as their primary. Not able to get to any of them. So this is so awkward, but this is now time for Box to try and show some dominance. They regrouped around Break and Soaz after their decent PMGC. I think it was World League. Now they really need to show their stuff here after losing a couple of players and reforming. Nearly perfect nade there coming through from Break, but doesn't quite get the knock. They will have got that hit marker, that indication that there's a player close. They know there's a vehicle moved. Well, they still know that there's a player this close. Mini 14 with the 4X on the off angle for VGS. Should be pretty solid at holding down this ridgeline, but if 3 players from Box go down, it's going to be tough. Around the side, though, gives away the position, and it's an easy spray down for Box Gaming to pick up their first elimination of the game. That's a really sick just run around there from the team. Very fantastic stuff overall. VGS just crumbling, obviously not able to get either of their drum spots in this game, and they just fumble for it. And this is what the 18-team lobby does to you. You know, you try and head to a spot that you think may be free, but it's just not. Still bleeding out VGS, down to 2. They will be taken on out. Donuts, they were contesting as well. Enigma Galaxy taking early losses. These are the 2 points that you were pointing out earlier. Yeah, that is rough there. But USG, honestly, this is a team that really wanted to take Rozhok. You know, in all the practice games we see them play before this, they have always gone Rozhok here. Just looking at anything on my... drops into out. Usually they're the Pachinki team, so maybe they dropped just slightly short. USG had to go a little bit further. And just on the way, they picked up a couple of points. You'll have to say it. Yeah. Certainly if you're a USG fan. Falcon, 4 players in a vehicle. Not advisable. They're heading towards Yasnaya Polyana as well, which is currently occupied by Morph. On this northern rotation, they are behind the game. Morph on the western side of Yasnaya right now. They will be holding down a lot of those buildings, a lot of those compounds. Hopefully they're going to spot the Falcons' approach, right? It's a very open field. If you're looking that way, you will be seeing them. They're only in 1 vehicle as well, which means that if you're taking some pot shots, you might even be able to get a couple of eliminations there. Absolutely. I mean, there's a real chance for it. Now, VGS, you know, broken and battered, heading up still past Damwon Kia, who've still gone for that Apps school split. It's a little tighter this time, though, and I respect that from Damwon Kia. James on the desk was talking about, you know, how really they wanted to keep things survival based. Get towards the end of the game, it's not about huge eliminations, it's just consistently putting up those placement points. Now, that's going to give you a good average point over in the PMWI, but 3 days, you do need to strike out a little bit. Donuts USG getting these initial 2 points and also claiming Rozhok straight away. This is fantastic for them. And Donuts USG, they've come out on top in Japan at the moment. Even in the PUBG Mobile showdown between Korea and Japan, they're a full 10 points ahead of anyone else in that lobby right at the top. So really fantastic stuff from Donuts USG so far. Hopefully spinning around, turning their opponents' heads
whenever they can. Morph, I think they have spotted Falcons. Falcons, you can see, still with a little bit of damage on board. That might have been from earlier, probably still healing that one up. Never Alone was the player who was already knocked by the enemy team. I don't know if it was Morph, actually. I have to go back and watch that again, but Falcons did get knocked. Oh, it was Morph from up the hill. That was the first engagement that they had. So they did already do a little bit of damage. It looks like they will not leave each other alone for now. VGS down to 2 players. They've spotted back-to-back on the ridge line. Looks like, back-to-back just want to take up position and see whatever vantage points they can try and claim. This is fairly interesting as well, because Regan's trying to head in the direction of Morph. These are 2 teams that drop in Yasnaya. Regan's with a Yasnaya South Kameshki split, but Falcon's trying to take up this position as well over in Yasnaya. So a lot of contention on this eastern side of the map. I know that 52 Esports, they've tried to take Stalba and then South Yasnaya as well before, but right now they're right on the western coast at the moment. Yeah, I mean it seems like they've changed it up. I mean, to be fair, there have to be some changes, right? In this lobby, it's a new mode that these teams won't have played with 18 teams in it, right? It is seemingly a small difference, but it absolutely will have an impact, as the desk covered previously. So we'll have to see what impact that actually has, because right now, we haven't seen much more than 1 or 2 hot drops, right? Well, what I will say, is that people have been very stubborn on their drop spots, and even just from the small research that I was able to do, I say small, no, modest, small research they were able to do about their drop spots beforehand in this tournament, a lot of these teams have gone for these drop spots regardless of how south that playing path was. So, we could have this gentleman's agreement going on from a lot of these teams. It's like, these are our spots, we can't go away from them. So secondary spots just really aren't too available anymore. And for that reason, if you get a really, really bad playing path, you could be in for a very bad game. Playing path on this one was very south, and the circle did shift up north. And I'm looking at the teams that have made that journey north early, and I'm looking at 4 rivals, right, all the way up in Severny. Yeah, right at the top of this circle now, playing from their northern bastion. Stalwart Esports on the southeast of the circle, just about crossing in. One of the favorites of this tournament right now, Blank. Yeah, absolutely. Like, I don't have too many notes on this team just because they play things so clean, and there's only so many ways you can write clean, to be honest with you. So I was very, very impressed with Stalwart. I think so is the desk. They're set for a fantastic PMWI, but we could see some rising stars, some rising countries just come out of nowhere and blast them out of the water, but we'll have to wait and see here. But for Stalwart, so far, things have been very good. I really do like this Novo drop for them in the beginning here. The edge of the map with 18 teams, it's going to be rough. There's not a lot of positions to play in, and with the loot that you get on board from Novo, with the 6 to 7 med kits that we saw already on just one of their players, they'll be able to outlast that storm on the edge. You'd hope so, with the caliber of teams that we're dealing with anyway. Although that works to their detriment as well, doesn't it? I mean, they have to face off against this super high caliber lobby. It's not going to be easy. Aiton take up the gas station. That's out to the west of Yasnaya Polyana. And Morph looking their way. Yeah, so Morph just on that western road, right, with Aton just underneath them. And Yasnaya, for Morph, that being their original spot, they've actually moved west here towards that northern coast. So, they're just looking out for any cheeky teams that try and hold on this north coast. And it's a great idea as well, because it's a very easy position to corner and cause mayhem from many teams, because you don't really want to cluster around this southern edge. There's so much space up towards Severny, especially with that southern playing path. This is a great position to, take up and just chill out, take some time for yourself, especially if you dropped in South George. Like some of the teams, in fact, we've already seen TJB move up. Vampire Esports might want to head up there, so will 52 just in the South George bridge right now. So Morph could get a lot of points just from this singular position. I'm looking at USG as well, right? You talked about earlier in the game. It's great. They've managed to get Rozhok. They've managed to lay claim to that area. But if they don't leave there early enough, it could prove to be their tomb, their mausoleum, right? If they aren't able to get across early enough, if it's a northern shift,
they could really be scuppered. Oh, yeah. I mean, you can take every one of these teams and just imagine that they're elastic bands. And USG is that first elastic band. And you know when you create that elastic band ball, at some point it is going to break and explode. And poor USG is right in the middle. They are going to Just get bigger elastic bands. I don't. You could do. I'm working with very small elastic bands here. They certainly have had that opportunity, probably more so than most of these other teams. Morph had to move a lot at the start. I mean, Enigma Galaxy might have had that opportunity, but unfortunately they lost 2 players early. Ooh. 4 rivals jetting down from the north side. You absolutely would as well. I mean, this is a great time for them. You know, you get such an awful playing path. You head up all the way to Severny, and the circle just continues to move north and north and north. And now at this point in time, they were being quite passive, but with this shift, they are absolutely sending it down into the circle, trying to take a position as fast as they can in one of the compounds. But it's TJB that's rocking up on 4 rivals who've just come to this position. GK First leading the charge, getting first opening and doing it brilliantly. Living up to the name, first elimination for the TJB squad now, 4 rivals in the corner, backed up to the back building here. The height advantage in favor of TJB. Morph over the ridgeline as well. Watch out for that scout, watch out for the third party if this fight goes on too long. The off angle is there for 4 rivals. You can see that in the minimap on the top right. They have got those sightlines to control, but Lin's moving forwards as well, putting pressure on 4 rivals, forcing them out of this compound, of this cover. They want to try and catch them. They don't quite have the off angles, not just yet, but with that nade, jumper taken low for rivals behind the vehicle. Lin out first. Zhao soon to follow, looking to go out wide. Will they spot the player? They should have caught sight of that one, and those bullets will certainly give the game away. The gunshots ring out, but not finding the knock. Jumper now in more danger. Swings around the corner. Lin sprays, but the Scar doesn't quite land it. Half HP, and it's spotted. There is the off angle. Tingsker finds what TJB are looking for. 2 players from TJB are looking for. 2 players from 4 rivals are down. Really incredible stuff, and yeah, I'm loving to see the new Scar love coming through, the most recent buffs for the guns coming into the game. You know, Scar being almost as good as the M4 now, if not better, depending in the hands. So really, really nice to see a little bit more variation in terms of that weaponry. Already another little knock coming through for Team Soul. But yeah, great stuff from TJB. Considering they were all the way over towards Hospital South George, that was one hell of a send that they made happen over towards this compound, which is now extremely central in this circle. TJB firing far. Enigma Galaxy, the first team to go down fully blank. They lost 2 players very early. Yeah. You kind of think, fair enough, go again. It's a bit of a struggle, though, for Enigma Galaxy. It's not kind of the precedent you want to be setting as that team when everyone knows you as the survivalist. You are the Bear Grylls of the lobby, and it's just not working out for them here. Scry from Stalwart taking some shots over towards Wildcats. Already Ray going down. Defoe off in the distance, takes some pot shots back, but now it's the Wildcats having to regroup here and trying to make something work. A moment, Wildcats heavily under fire for Stalwart on the south side of them, but there's a traffic jam to get further into the zone as the next circle pops heavily south as well. So it will be on their shoreline, but they have a lot of treacherous ground ahead of them. Action eliminating Ray here. Of course, if you guys want to earn points, you can complete daily mission. Once enough points are accumulated, you can tap on the rewards icon in the game to claim the corresponding reward. That's if you're watching enough of this PMWI. You can participate in the event solo or team up with other players. That's absolutely fine. And you know what? Just like the players in the PMWI, teaming up could get you that reward just a little bit easier. There's Vampire. You can see, you were talking about them earlier. They're swimming in the river right now. I always think that these river finishes in the middle section near that Roshok crossing
is one of the most brutal places that these circles can finish. I mean, all these teams on the northern side are going to be dragged across sandpaper, basically, trying to get into this circle. It's so unfortunate because you assume it's going north here. TJB got such a nice position, and it swings back down south. Now, I want to see USG, the Japanese team, translate this because they've been given such a good opportunity here for a chicken dinner right at the beginning of the day. Hector looking to guard them out. Currently on the eastern side of the circle, will stop that rotation north, stop that progression west. Make things difficult. Down one, ahead. You can see they're taking a couple of knocks from back to back. I think this is the circle where most of this impact to the 18-team lobby will be felt, although we are down to 62 players. 17 teams still. I did not expect this at this point in the game. Already 17 minutes in. It's absolutely nutty here. 52 esports do knock themselves, though. That is extremely unfortunate. They're coming from that western side. But Stalwart, we mentioned them. They were taking a fight versus the Wildcats, and this is where they need to play the edge game perfectly. They've been thrown a little bit of a lifeline here on the southern edge. See if they can make anything happen with it. Stalwart taking shots. Really fast and strong rotation, I'd say, but Lightning does get caught there, unfortunately, for the spray down. And they are going to lose him at the wall, up the top, back-to-back, have their Polo. Representative for the squad. As the nades start to ring out. They're not going full aggression just yet, Blank. Now, if you want to get yourself the 2022 PMWI Gunskin and outfit, you know, we have a sale period going on through from the 4th of August through to the 13th of August. We have 50% off PMWI packs, and you get a set straight away in that time frame and 5 extra chances to draw the PMWI treasure chest. And if you miss out on that first sale period, there is a second one from the 14th of September all the way up till the 15th of the next month, where you get 16% off PMWI packs. You get 6 chances to draw PMWI treasure chests. Looking straight back at the game here, back-to-back have actually made it quite far from there. It was quite a difficult drop spot for them on that southern edge on the coast. Wildcats still in this one with 3 players. Surprisingly, you know, they took an absolute beating from Stalwart on that southeastern edge, but the circle is starting to close in right now, directly on top of Rozhok. Oh, USG, yes please. They're very happy about that, you're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. You're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. You're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. You're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. खेलने का एंड बैक साइड से लक्स एक स्प्रे देते हैं, मर्फ के रॉकी डाउन हो जाएंगे. आखिरी प्लेयर इस वक्त से मौजूद, रिवाइवल की कोशिश की जाएगी लेकिन शायद ये ग्रेनेड उनको इस मैच से बाहर भेज देगा. लेकिन ग्रेनेड आता है, डैमेज प्लेयर को थोड़ा बहुत पड़ता जरूर है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि डेनिस बैंक के प्लेयर इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं. 3 नॉक्स निकाले थे उन्होंने, और इसी के साथ साथ फ्लैंक पे मौजूद प्लेयर लक्स यहाँ पर सब 6 किल्स भी कंफर्म कर जाते हैं. ऐसा लग रहा है कि लक्स नहीं, वो सारे के सारे किल्स बटोरे जरूर हैं, लेकिन डजंट मैटर. इस्तांबुल वाइल्डकैट्स अपना सामने का एरिया क्लियर कर चुके हैं, अब उनको कवर मिल जाएगा. और जहां पर ओपोनेंट टीम इतनी बड़ी मुश्किल में जूझ रही थी, वहीं पर ये टीम अब बासानी खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि इनको चैलेंज करने के लिए कोई भी टीम आसपास मौजूद नहीं है. लेकिन किल फील्ड में सोल के हेक्टर नॉक होते हुए नजर आए हमें. गॉब्लिन और अक्षत हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद. हेक्टर यहाँ पर जो वो काफी पीछे मौजूद है, और हेक्टर को यहाँ पर देखें आप तो वो ब्लीड आउट भी कर रहे हैं, लेकिन ग्रेनेड्स फेंके जाएंगे एक्शन की तरफ से. गॉब्लिन इन ग्रेनेड से बचते हुए नजर आएंगे. एक ही कंपाउंड में 2 प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन सोल वर्सेस एसटीई की फाइट में सोल की गॉब्लिन फिर से नॉक हो जाते हैं. ओके, और रश आता हुआ एक ही प्लेयर मौजूद है, एक प्लेयर को गिराने में कामयाब टीम स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्शन आएंगे. एक्शन घुटनों पर लेकर आ जाते हैं अक्षत को एलिमिनेट भी कर दिया जाता है. टीम स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स के टॉप एलिमिनेट हो चुके हैं. सो 3 मैन स्टैंडिंग स्क्वाड वर्सेस टीम सोल के गॉब्लिन नॉकडाउन है, वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं. आखिरी प्लेयर टीम सोल को रिप्रेजेंट करते हुए अभी तक सर्वाइव करे. जस्ट लुक एट द मिनी मैप, क्या ही क्राउडेड सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है. इट्स ए कंप्लीटली बैड ब्लड अमंग्स दिस
दिस लॉबी, लेकिन टीम वीपीई के प्लेयर्स रिज को होल्ड कर रहे हैं फिलहाल, और रिवर पर जितने प्लेयर स्कोर मौजूद हैं, पानी के अंदर हैं, उनके ऊपर अपने फ्रैग्स स्कोर करने की कोशिश की जा रही है। दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। बिल्कुल लॉबी से अलग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन प्लेयर्स को पकड़ा जो कि ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके हाथ बंधे हुए थे, और एंड जस्ट लुक एट दैट, टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स 8 किल्स ऑलरेडी स्कोर कर चुकी है। आई थिंक सो इस लॉबी के अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ किल्स अभी तक इनके पास ही मौजूद रहेंगे, लेकिन बैक टू बैक के प्लेयर्स बिल्कुल सामने मौजूद है। टीम 4 राइवल्स के प्लेयर एक बैक स्टैप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए जोन के अंदर किसी ना किसी तरह अपनी जगह बनाना चाहते हैं। टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर भी मौजूद है, एक प्लेयर को एलिमिनेट भी करते हैं। टीम 8 ऑन ई स्पोर्ट्स के प्लेयर एलिमिनेट करते हैं बैक टू बैक एक प्लेयर को, लेकिन बैक टू बैक अपने ही प्लेयर को नेट से मार देते हैं। इनफैक्ट 2 प्लेयर को नेट से ही मार देते हैं। What just happened? क्या किल्स नहीं देना चाहते थे वो लादेन? I don't think so कि सिचुएशन में आप किल डिनाई करना चाहेंगे। शायद यहाँ पर जो एक उनकी तरफ से मैं कह सकता हूँ कि एक गलती की गई है, या कह लें कि एक गलत मूव उनकी तरफ से उठा लिया गया जो वो नहीं चाहते थे कि वो उठाएं। लेकिन वहीं पर फाइट का सिलसिला मजीद चलता रहेगा। क्या ना टीम हमारे सामने रह जाएंगी ख़वातीन और हज़रात, और 29 प्लेयर्स अभी भी जिंदा हैं। टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स बहुत किल्स उठा ली है। अब सर्कल में आने के लिए उनको टीम यूएससी को क्लियर करना पड़ेगा, और यूएससी अगर मौका देती है, एक भी उनकी तरफ से गलत मूव किया जाता है, तो वैम्पायर स्पोर्ट्स बिल्कुल उसको खातिर में लाने से पीछे नहीं हटने वाली। और आप देखेंगे यूएससी वो डिनाई कर रहे हैं, वो इस एरिया को वो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, अबैंडन कर रहे हैं, और शायद अब वीपी को एक बहुत ही आसान एंट्री मिल जाए। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फाइनली हम वैम्पायर स्पोर्ट्स को एक चैलेंजिंग सिचुएशन में देखेंगे, लेकिन जहाँ पर उन पर चैलेंज आया, जो टीम चैलेंज देना चाह रही थी, वो फॉल बैक कर जाती है, एंड एक अच्छा सर्कल में इंट्रेंस उनको मिल जाएगा। बट एटम स्पोर्ट्स के साथ फाइट लेती हुई टीम डोनट्स यूएससी इस वक्त नजर आ रही है हमें। डोनट्स यूएससी के प्लेयर कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर भी मौजूद हैं, तो ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होंगे। वहीं पर होल्ड बनाने के साथ साथ उनको अपने आसपास की टीम से सर्कल में आना चाह रही है, उनको उठाने पड़ेंगे, और यहाँ वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और वीवो क्यू का स्क्वाड मौजूद है हमारी स्क्रीन के ऊपर। अब वो मरहला आ चुका है जहां पर आपको फाइट करनी है फॉर द ग्लोरी, फॉर द चिकन डिनर। अगर आप इस मैच के अंदर, इस इवेंट के अंदर ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं, तो इस मैच को आपको लेकर जाना है। अगर मैरिट सेट करना चाहते हैं, लेकिन खूबसूरत नेड एलिमिनेशन स्कोर की जाती है। 11 किल्स ऑलरेडी वीपी के पास आ चुके ऑलरेडी, एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सून। 8 ऑन ई स्पोर्ट्स के एक प्लेयर अभी तक सर्वाइव करते हुए कंपाउंड के अंदर स्टेल्थीनेस का मुजाहिरा कर रहे हैं। यूएसजी के प्लेयर्स भी 5 किल्स लेकर जा चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके चारों के चारों प्लेयर्स भी सर्वाइव कर रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट एक चीज निकल कर सामने आई है कि अगर आप किसी ना किसी तरह अपने प्लेयर्स को सर्वाइव करवा लेते हैं चारों के चारों, तो किल्स आप निकाल ही लोगे। और बॉक्स गेमिंग अगर आप देखें तो वो भी अच्छी इस मैच में कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यूएसजी शॉटगन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यूएसजी के प्लेयर्स 8 ऑन ई स्पोर्ट्स के प्लेयर को एलिमिनेट करना चाहते हैं। यूटिलिटीज थ्रो की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक भी प्लेयर इस फाइट के अंदर ना गवाया जाए। नेट हिट करता है 8 ऑन ई स्पोर्ट्स के एक और मजीद प्लेयर घुटनों पर आते हुए, और इस मैच से इंस्टेंटली एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी भी सातों की सातों टीम सर्वाइव कर रही है। 18 प्लेयर्स अभी भी लॉबी के अंदर जूझते हुए। टीम सोल के भी अकेले सर्वाइव कर रहे हैं। बॉक्स के प्लेयर मौजूद हैं, एक और मजीद नॉक निकालने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं निकाल पाएंगे। टीम सोल के आखिरी प्लेयर ओमेगा मौजूद हैं, और बिल्कुल ब्रोकन वॉल के नजदीक प्रोन गेम खेलते हुए बैक एंड से इनको बचना पड़ेगा। स्मोक्स उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वाइवल निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल जी, सर्वाइवल निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ट्रेंड देखें आप किस तरह से यहाँ पर सेट होता हुआ नजर आएगा। तमाम टीम्स फाइट के अंदर जुड़ती नजर आएंगी। ओमेगा आज सारी फाइट के अंदर फोन डाउन होकर लग रहे हैं सर्वाइव, लेकिन बॉक्स के प्लेयर यहाँ पर डैमेज खाते हुए एसटी के हाथों, एसटी के प्लेयर्स यहाँ पर नॉक करते हुए नजर आएंगे। बॉक्स से ब्रेक एमवीपी को किल कंफर्म भी करना चाहते हैं, बट ओमेगा वो इस वक्त बिल्कुल भी पोजीशन अपनी रिवील नहीं करना चाहते। वो इस वक्त मैं कहना चाहूँगा किसी तरह से घास के साथ बिल्कुल अपने आप को जब वो मैं कहना चाहूँगा गायब करते हुए नजर आएंगे। नेचर के साथ ब्लेंड इन होते हुए नजर आ रहे हैं हमें, और एसटी के प्लेयर्स जैसे ही वो हिल पर आएंगे ऑब्वियसली वो स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन जितने अनएक्सपेक्टेड एरिया पर मौजूद है शायद उनका स्पॉट नहीं किया जाए, लेकिन पुश करते हुए नजर आएंगे वहाँ पर प्लेयर्स के ऊपर इस वक्त बॉक्स टीम के प्लेयर, और वहीं पर यूएसजी भी डैमेज खाती हुई नजर आती जरूर है। तीनों टीम्स एक दूसरे के साथ फाइट लेती हुई नजर आएंगी। बैकएंड से थर्ड पार्टी करते हुए हमें टीम सोल के प्लेयर के ऊपर एसटी के प्लेयर नजर आते हैं, और किल कंफर्म भी किया जाता है इंस्टेंटली। टीम सोल 5वें पतन पर इस मैच से 3 एलिमिनेशन के साथ बाहर हो जाती है, लेकिन फिलहाल बॉक्स वर्सेस यूएससी वर्सेस एसटीई एंड वैम्पायर स्पोर्ट्स, ये 4 टीम हमारे सामने मौजूद है। चिकन डिनर की दावेदार इस वक्त वैम्पायर स्पोर्ट्स मौजूद है, 19 किल्स उनके पास मौजूद है। का एक अलग ही रंग दिखा रही है ये टीम।
वो जो बात मैंने कही थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक टीम सिर्फ इस लॉबी के अंदर डोमिनेशन ना दिखा पाए, उसको बिल्कुल गलत साबित करती हुई टीम वीपीई, जस्ट लुक हाउ गुड दे आर। दोनों के दोनों प्लेयर्स उस घर को रैप राउंड करते हैं, लेकिन टीम बॉक्स गेमिंग का अभी तक इनको सामना करना पड़ेगा। टीम सॉलिड स्पोर्ट्स के एक्शन भी मौजूद रहने वाले, 3 नेट्स इनके हाथ में मौजूद रहेंगे, 5 एलिमिनेशंस ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स को नेट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, काफी हद तक लो करने में कामयाब। टीम सॉलिड स्पोर्ट्स के एक्शन का एक और फॉलोइंग नेट जाता है, देखते हैं कि क्या कोई नॉक निकाल पाएगा। नॉक भी निकालेगा ये नेट, काफी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है बॉक्स गेमिंग। एक और फॉलोइंग नेट थ्रो कर रहे हैं, नेट्स की भरमार की जा रही है टीम सॉलिड स्पोर्ट्स के। अभी तक 2 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। बॉक्स गेमिंग का पूरा फोकस टीम सॉलिड स्पोर्ट्स की तरफ जाता हुआ, लेकिन वीपीई के प्लेयर्स इसी चीज का फायदा उठाते हुए कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जा रही है। वैम्पायर स्पोर्ट्स ऑलरेडी हैव बहुत अच्छे किल्स उनके पास मौजूद है, 10 से ज्यादा किल्स वो स्कोर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 किल्स स्कोर कर चुके हैं। इनफैक्ट क्या ही खूबसूरत परफॉर्मेंस वीपीई की तरफ से। आने वाले मैचेस के अंदर ये स्क्वाड काफी ज्यादा नजरों में आने वाला है, लेकिन अभी के लिए यूएसजी के आखिरी प्लेयर सर्वाइव करना चाह रहे थे, लेकिन उनका भी किल वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर लेकर जाते हुए टीम सॉलिड स्पोर्ट्स के प्लेयर सामने आएंगे। पिका को स्पॉट डाउन करने में कामयाब, पिका को नॉक डाउन किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की तरफ से। बिल्कुल जी, वैम्पायर स्पोर्ट्स यहाँ पर एक और किल कंफर्म करते हुए नजर आती है अपने बैकपैक के अंदर। 23 किल्स टीम कंफर्म कर चुकी है। फ्लूकिट की तरफ से बोनस निकाला जाएगा, टीम बॉक्स के ऊपर पुश किया जाता है। आखिरी प्लेयर मौजूद, उनका भी किल कंफर्म करते हुए 25 किल्स आई थिंक ये टीम जो कंफर्म करती आई है। 25 किल्स हमने Did you hear the audience? PUBG मोबाइल वर्ल्ड इनविटेशन में आदि कहीं जाकर ओह माय गॉड, वैम्पायर स्पोर्ट्स ने अलादीन हैरान कर दिया है। और मेरे को जो लोग जोन की वजह से जो मुश्किलात इन्होंने उठाई है, उनको साइड पर रखते हुए 20 किल्स कर लेकर जाना, मेरे ख्याल से दैट इज समथिंग अमेजिंग, और जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता कोई। आई थिंक सो 19 किल्स, जहां पर हमें ऐसा लग रहा था कि 6 मैचेस में स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा इस लॉबी के लिए, लेकिन देखते हैं क्या सिचुएशन बनती हुई हमें नजर आती है। अभी के लिए वैम्पायर स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। टीम सॉलिड स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी सर्वाइव कर रहे थे। बॉक्स गेमिंग को खासकर मैं दाद देना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को इस मैच के अंदर सर्वाइव करवाया, लेकिन इन सारी बातें एक तरफ, सारी परफॉर्मेंसेस एक तरफ, वैम्पायर स्पोर्ट्स ने जो कर दिखाया दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल। और ऐसा हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार कोई एक स्क्वाड निकल कर लाइक 20 किल स्कोर कर लेगा पहले ही मैच में। देखिए, वैम्पायर स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको याद हो तो रोज़क का जो वाटर्स साइड है वहाँ पर संभाला, वाटर्स एरिया को, वहाँ पर 7 किल्स उठाए। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वैम्पायर स्पोर्ट्स के इन 24 किल्स का, वो डोनट्स यूएसजी को भी जाएगा। इस बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मैच रैंकिंग की, जहाँ पर मैच 1 के अंदर 39 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स यहाँ पर ये टीम लेकर जा चुकी है। और वहीं पर यूएसजी सेकंड स्पॉट पे मौजूद विद 16 पॉइंट्स। लुक एट द डिफरेंस, आदि डबल से भी ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर निकाले हैं सेकंड प्राइवेट टीम के मुकाबले में। और अगला बेशक ये टीम मैच मिस भी कर दे तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे। थर्ड स्पॉट पे मौजूद है टीम सॉलिड स्पोर्ट्स, 5 किल्स उनके पास ही मौजूद हैं। एग्रेशन तमाम टीम से मैं कहता हूँ कहीं ज़्यादा इस टीम ने दिखा दिया, और इस बारे में बात करेंगे जरूर, लेकिन बात करते हैं फोर्थ स्पॉट पे मौजूद बॉक्स गेमिंग की। 8 टोटल पॉइंट्स उनके पास ही मौजूद हैं। एग्जैक्टली, और टीम सोल ऑन द 5th स्पॉट फ्रॉम इंडिया 9 पॉइंट्स लेकर जाने में कामयाब। टीम एटॉनी स्पोर्ट्स 7 पॉइंट्स लेकर जाते हैं, 5 किल्स मौजूद हैं। वीवो का जो स्क्वाड है 7th स्पॉट पर 6 पॉइंट्स लेकर जाने में कामयाब ओवरऑल इस मैच में। DWG डैम1 गेमिंग विद 5 पॉइंट्स, 1 किल रहेगा और 4 प्लेसमेंट पॉइंट्स अपने बैकपैक में लेकर जाने में कामयाब। सो पहले स्पॉट को छोड़कर ऑलमोस्ट जितने भी टॉप 5 के अंदर टीम्स हैं वो काफ़ी क्लोज उन्होंने पॉइंट स्कोर किए हैं, और वैम्पायर स्पोर्ट्स ने बहुत किल छीने हैं, बहुत से प्लेयर्स को सर दर्द उन्होंने लगवा दिया है। और आई थिंक सो काफ़ी प्लेयर्स की अब जो है वो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। आई थिंक सो वो लैन के अंदर वो होगा ना कि जब एक टीम 19-20 किल्स करके लेकर जाती है तो पूरी की पूरी लॉबी उनकी तरफ मुड़कर देख रही होगी कि भाई ये क्या किया, ये मतलब तुम लोगों ने किया क्या है हमारे साथ। सो वो वाले सीन्स जो है वो बना दिए जा चुके हैं वैम्पायर स्पोर्ट्स की तरफ से, लेकिन इस डोमिनेशन को कंटिन्यू रखना एक बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। एंड इनफैक्ट व्हाट आई बिलीव अलादीन इज कि वैम्पायर स्पोर्ट्स के लिए कहीं ना कहीं अगला मैच चैलेंजिंग होने वाला है।
बिल्कुल जी, वैम्पायर स्पोर्ट्स के लिए अगला मैच चैलेंजिंग इस तरह से भी हो सकता है कि अब तमाम लॉबी की नज़र उन पर होगी और Exactly. लेकिन फिलहाल आप देखें कि थोड़ा सा ज़रा मैच की तरफ वापस जाते हैं। अगर वहाँ पर यूएसजी की थोड़ी सी बात कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा ही ईजी एंट्रेंस दे दी टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स को, मुझे उस चीज़ पे बिल्कुल भी मैं अभी भी वो सोच कर हैरान हो रहा हूँ कि एक टीम ऑलरेडी इतना कहर मचा रही है, आपने उसको बासानी सर्कल में आने दिया। उसके बाद उस टीम ने जब सर्कल में एंट्री ली तो उन्होंने मजीद कहर बर्पा किया। उन 7 से 8 नंबरों को, जो 8 से 9 नंबर से जो कि वोटर साइड पर उस टीम ने बटोरे थे, उसको वो 20 से 24 तक ले जाते हैं और उस टाइम पर बॉक्स उनके ऊपर पुश करती है। उस टाइम पर यूएससी को उनकी तरफ से एलिमिनेट किया जाता है। तमाम टीम्स को यहाँ से जो है वो खदेड़ती हुई टीम नजर आती है और एक एक करके किल्स जो वो बटोरे जाते हैं अपने बैकपैक में। हर चीज़ ऑन पॉइंट थी टीम इस टीम की, वैम्पायर स्पोर्ट्स की। थाईलैंड से ये टीम आई है और आकर इन्होंने जब वो कमाल